वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड ट्रिप सीरीज़। इस ट्रिप में हमने तकरीबन 7 डेज़ वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में स्पेंड किए और बहुत सी प्लेसेस देखी। जर्नी का आगाज़ हमारा ईज़ी जेट से हुआ, ईज़ी जेट फ़्लाइट से, और गेटविक एयरपोर्ट से हमने ये पकड़ी। ईज़ी जेट को इतनी ईज़ी भी नहीं, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी फ़्लाइट पकड़ी। और स्विट्ज़रलैंड के लिए हमारा ये ट्रिप का सारा लगेज था। और ईज़ी जेट हमने तकरीबन 5 मिनट गेट बंद होने वाला था तो तब जाके हमने कैच की। एंड द वेदर वाज रियली गुड एंड माय बेबी इज़ ऑलवेज प्रेफर टू सिट इन विंडो सीट और ऑन टाइम फ़्लाइट हमारी चली और बहुत अच्छा वेदर के वजह से हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, विंडो व्यूज़। और ये अब हम लैंड करते हुए के सारे व्यूज़ हैं इन बेज़ल एयरपोर्ट। और स्विट्ज़रलैंड में ये लोग बेज़ल को बाज़ल कहते हैं, एप्पल को आपल कहते हैं। तो वहाँ पे जब भी आप जब लैंड हों तो अगर आप बेज़ल एयरपोर्ट कहेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बाज़ल बोलें तो तब उन्हें समझ आएगी। तो फाइनली हम जब लैंड हुए तो बहुत क्विक प्रोसेस में हम 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम बाहर अपना लगेज क्लेम कर रहे थे। जी गाइस, हम बेज़ल एयरपोर्ट पे आ गए हैं। ये फ्रांस में है, फ्रांस के और उसके बिल्कुल बॉर्डर पे है। और अब हम यहाँ से शटल लेंगे जो आपको बेज़ल एसबीबी स्टेशन पे उतारेगी और वहाँ से हमने सीधा ल्यूज़न चले जाना है, वहाँ पे हमारा होटल है। जी हम बेज़ल स्टेशन पे पहुँच गए हैं, वेरी बिजी एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ल्यूज़न। वेरी अमेजिंग वेदर, रोमांटिक वेदर। बेज़ल स्टेशन काफ़ी बड़ा और बहुत खूबसूरत था। और यूजुअली स्विस के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्वाइट हैं और इतना ज़्यादा शोर आपको नहीं वहाँ पे कहीं भी स्टेशंस में दिखेगा। और ग्रोसरी बहुत ज़्यादा महंगी, हमें जाते ही झटका लगा। और तकरीबन 1.5 फ्रैंक्स का आपको इतना सा 1 लीटर पानी मिल रहा था। तो 1.5 फ्रैंक्स मीन्स 1.20 पाउंड्स। तो फाइनली हम निकल पड़े वहाँ से ट्रेन लेके ल्यूज़न की तरफ। और माई किड्स आर रियली इंजॉइंग द पैनोरामिक ट्रेन। सर्विस अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्विट्ज़रलैंड में, तो मेक श्योर आपको बहुत अच्छा अपार्टमेंट कोई बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाए। थैंक्स टू booking.com फॉर माई लॉयल्टी डिस्काउंट। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा उन्होंने हमें रूम दिया। सुबह सवेरे ग्रोसरी ली माइग्रोस से और आल्डी से, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट शॉप्स इन स्विट्ज़रलैंड। वैसे स्विट्ज़रलैंड तो ओवरऑल बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। बॉइल्ड एग लेता हूँ मैं और बहुत ज़बरदस्त ये रहता है ड्यूरिंग ट्रिप, और आपका पेट काफ़ी देर फिल रहता है और यू कैन इंजॉय द ट्रिप। 6 डेज़ का हमने स्विस पास ख़रीदा हुआ था जो 300 पाउंड पर एडल्ट हमें पड़ा। और उसके हिसाब से हमें ये फेरीज़ एंड एवरीथिंग, अनलिमिटेड फेरीज़, ट्रेन, ट्रैम्स एंड एवरीथिंग हमें बिल्कुल फ्री थी फॉर 6 डेज़ इन ऑल ओवर स्विट्ज़रलैंड। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया क्यों ना ल्यूज़न लेक की सबसे पहले क्रूज़ ली जाए, क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो हम रिलैक्स होना चाहते थे। तो इस वजह से हमने पहले रिलैक्सिंग ट्रिप का प्लान किया। एंड वन ऑफ द बेस्ट क्रूज फॉर स्टेइंग इन ल्यूज़न। देन ये बेहतरीन आपकी क्रूज़ है और ये आप यहाँ से अपना ट्रिप का बिल्कुल बिगनिंग कर सकते हैं इफ़ यू हैव गॉट 6 to 7 डेज़ इन स्विट्ज़रलैंड। तो बहुत ही खूबसूरत इर्द गिर्द के नज़ारे थे, इतनी क्लीनलीनेस, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बग़ैर किसी आलूदगी के मैंने इतनी ग्रीनरी फ़र्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन। और बहुत ही खूबसूरत इर्द गिर्द, बहुत कूल एंड काम पीपल हैं स्विट्ज़रलैंड के, बिल्कुल खामोश रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्वाइट है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो आप इर्द गिर्द अमेजिंग आप नज़ारों का आप जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आउटस्टैंडिंग प्लेसेस नियर अराउंड। इसके बिल्कुल आसपास एक साइड पे माउंट टिटलिस है एंड ऑन दी अदर साइड आपको माउंट प्लेटोज मिलेगी। और आज के दिन हमने प्लान किया था कि क्यों ना माउंट प्लेटोज जाया जाए फर्स्ट। और मौसम बहुत ही खूबसूरत था, एक साइड पे बिल्कुल बादल थे और एक साइड पे बिल्कुल बादल बिल्कुल नहीं थे। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। आप ये खुद इसको देखिए और बताइए कि इतनी खूबसूरती और इतनी सफाई कहीं और आपने देखी है। आउटस्टैंडिंग।
स्टीपेस्ट ट्रेन आपको मिलेगी जब आप माउंट प्लेटोज जाना चाहें। माउंट प्लेटोज 4000 मीटर पे है और आप देखें अमेजिंग क्या डेवलपमेंट है स्विट्ज़रलैंड। प्लेटोस हम आ गए हैं और ये मेरे पीछे आप प्लेटोस देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम ट्रेन लेंगे और वो ऊपर जाएगी। 72 फ्रैंक्स की हमें ट्रेन पड़ी है, तो मैंने अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स की टिकट्स ले चुका हूँ और ये आप देख भी सकते हैं कि 36 फ्रैंक्स है। तो या गेट सेट गो। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स माउंट प्लेटो। 4000 मीटर हाइट है एंड इट्स हाफ एन आवर जर्नी फ्रॉम न्यूजन क्रूज। इट्स अमेजिंग। मिनट्स का ये जर्नी होता है, कैरिंग अराउंड 50 पैसेंजर्स। स्टीपेस्ट ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त और पिक्चर सीक आपको प्लेसेस मिलती हैं इर्द गिर्द पे। आप ये पैनोरामिक स्टीपेस्ट ट्रेन में जब बैठते हैं तो बहुत ही खूबसूरत वेदर था। आपको एक कंट्री बता दें जहाँ पे 4000 मीटर की बुलंदी पे इतना बड़ा आपको सेंटर मिले, जहाँ पे लाउंज हो, जहाँ पे कैफ़ेज़ हों और वहाँ पे शॉप्स हों, सवीनियर शॉप्स हों और बैठने के लिए पब्लिक के लिए बेहतरीन निज़ाम हो। 4000 मीटर की बुलंदी पे अमेजिंग लवली आपको डेवलपमेंट भी मिलेगी स्विट्ज़रलैंड में, क्लीनिनेस भी मिलेंगी, उसके अलावा सुपर सॉफ्ट लोग भी मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग। ऑफ द पीक में हम थे और यहाँ से अगर आप हाइक करें नीचे ग्राउंड लेवल तक तो 4 आवर्स का ये हाइकिंग टूर है प्रॉपर। बहुत ही खूबसूरत, इतनी सफाई, और आप नीचे देखें कैफ़ेज़ बने हैं और उधर भी इतनी सफाई खूबसूरती, एक्सीलेंट मैनेजमेंट रखी हुई है। दैट्स वाई स्विट्ज़रलैंड इज़ समथिंग एल्स एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट अ प्लेस एंड लवली नेचुरल ब्यूटी। सूरत लाउंज में हमने थोड़ी देर स्टे किया और यहाँ से स्टीपेस्ट ट्रेन को आते जाते बार बार देखा। जैसे आप देख सकते हैं रेड ट्रेन नीचे को जा रही है और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, ज़बरदस्त। आप घर से अगर आप चाय लेके आए हैं और कॉफ़ी अगर आप यहाँ से पीना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मंज़र है। और यहाँ पे हम सब ने फ्रेंड्स ने मिल के यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, गप्पे शप्पे लगाई और लवली वेदर को इंजॉय किया।
3 to 4 आवर स्पेंड करने के बाद फाइनली हम वापस चेयर लिफ्ट की जाने बढ़े और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त 2 टाइप्स की चेयर लिफ्ट जाती हैं नीचे को। फर्स्ट चेयर लिफ्ट केबल कार है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आप कह सकते हैं कि केबल कार में तकरीबन 55 पीपल यहाँ पे मैक्सिमम आप इसमें बैठ सकते हैं। और आप हाइट देखें और एक केबल कार की कैपेसिटी देखें और इतनी स्मूथ, ना कोई झटका ना कोई चक्कर। अंडर 5 मेरे 2 किड्स थे और वो इतने पुरसकून होके इस केबल कार में बैठे। और सारा पैनोरामिक है ये पूरी केबल कार, ऑल ओवर दी वे ग्लास है यहाँ पे। वाह। जी, ल्यूजन टाउन सेंटर में हम हैं और काफ़ी क्वाइट है। अराउंड 7 o'clock हैं और वी आर लुकिंग फॉर हलाल फूड। और आई होप कि हमें काफ़ी ऑप्शंस मिले हलाल फूड में। सो लेट्स सी। एंड आपको यहाँ से टाउन सेंटर दिखाते हैं, बहुत डिफरेंट है। ये देखें। फाइनली मिर्च मसाला रेस्टोरेंट हमें मिला और उसके साथ एक और हमें हलाल फूड फ्रेंचाइज मिली और बहुत ही अच्छा मुनासिब 11 फ्रैंक्स पर पोर्शन हमें मिल रहा था। यहाँ पे चिकन करी एंड ऑल अदर रेस्ट ऑफ अदर डिशेस एज वेल। लास्ट मोमेंट चल रहे हैं आज के डे 1 के और हम आल्डी आए हैं। ग्रोसरी यहाँ बहुत बहुत महंगी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। और यहाँ पे हम यही आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1 लीटर पानी की बोतल भी आपको तकरीबन 1.20 फ्रैंक्स की पड़ेगी। आप ये देखें, चिप्स खाली आपको मिल रहे हैं 4.49 के। और ये देखें, ये चिप्स आपको 4.99 का मिल रहा है चिप्स। और ये आपको इंग्लैंड में आराम से 1 पाउंड 2 पाउंड का आपको ये पैकेट मिलता है। तो ये 2 से भी ज़्यादा काफ़ी महंगा ये आपको यहाँ पे सामान होगा। तो हमने अपना बस डेयरी आइटम लेना है यहाँ से और थोड़ा बहुत बस वो लेके हम जा रहे हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है कि जो मेक श्योर आपके आसपास आल्डी ज़रूर हो जब भी आप होटल बुक करें, कुछ भी करें। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ आप माइग्रोस उससे ज़्यादा महंगा है, उसके बाद फिर बाकी महंगे हैं काफ़ी। तो वेरी गुड स्टोर इन मिडल ऑफ स्विट्ज़रलैंड टाउन सेंटर। तो यू मस्ट ट्राई दिस वन इफ़ यू वांटेड टू ईट और ग्रोसरी टू डू शॉप एनीथिंग वेरी चीप। अब का समर ऐसे नहीं पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत समर, क्योंकि यहाँ मगरिब ही 10 बजे के करीब शाम को रात को जाके होती है। इधर शाम ही 10 बजे होती है और तकरीबन 9:30 हो चुके थे और इतनी खूबसूरत शाम हमें मिली बिल्कुल ल्यूजन के वुड ब्रिज के पास। और बहुत ही अच्छा हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया जाए। व्हाट अ प्लेस, ज़बरदस्त, बहुत साफ़ शफाफ पानी साथ और सब लोग यहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं और हर तरफ पुरसकून आपको इन्वायरमेंट मिलता है। ज़बरदस्त, आप बस ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते कि इतनी खूबसूरती के आउटस्टैंडिंग। हैट्स ऑफ टू स्विट्ज़रलैंड। डिनर और ज़बरदस्त दिन के बाद हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। शाम ही इतनी खूबसूरत थी कि हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम वापस होटल की तरफ जाएं। बट वी हैव टू गो बैक टू आवर होटल बिकॉज टुमारो
बहुत ज़्यादा बिजी दिन था हमारे लिए और वो था ज़रमट का। सी यू ऑन नेक्स्ट डे।
लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड दोनों बहुत बैलेंस्ड हैं। आपको दोनों साइड से ट्रेन की बिल्कुल इक्वल सॉर्ट ऑफ खूबसूरती आपको मिलेगी, ब्यूटी मिलेगी इर्द गिर्द। और ख़ास तौर पे वाटरफॉल तो आपको तकरीबन दोनों साइड पे इजीली मिलेगा। जैसे ये वाटरफॉल, क्या खूबसूरत वाटरफॉल था। और बहुत बहुत जो पानी जो है उसकी खूबसूरती और इतना साफ शफाफ पानी से जो नेचुरल ब्यूटी है उसका एक मज़ा और ही दुबाला हो जाता है। तो ये वाटरफॉल हमें बहुत खूबसूरत लगा और यहाँ पे मैंने फटाफट इसको कैप्चर किया। इसी तरह के वाटरफॉल आपको जगह जगह रास्ते में मिलते हैं। फाइनली हम ज़रमट आ गए 3000 एंड समथिंग मीटर की बुलंदी पे। और यहाँ पे आपको प्रॉपर शहर ही दिखेगा, एक किस्म का टाउन कह सकते हैं आप, टाउन दिखेगा। और इधर कोई भी व्हीकल, कोई आपको पेट्रोल डीजल पे नहीं चलती हुई दिखेगी। एज़ यूजुअल हमने फटाफट ट्रेन पकड़ी गोनग्राट की, क्योंकि ये जो है ट्रेन बंद हो जानी थी आफ्टर 5 o'clock। तो ये हमें 63 फ्रैंक्स ईच एडल्ट की टिकट पड़ी और ये हमें ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन लेके जाती गोनग्राट के। तो लकीली हमें फ़ौरन ट्रेन मिल गई और हम उसमें सवार हो गए। क्या खूबसूरत जर्नी है। अगर आप ज़रमट आएँ और आपने गोनग्राट की ट्रेन नहीं ली और अगर आपने मैटरहॉर्न की चेयर लिफ्ट नहीं ली तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ज़रमट आने का, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं इन स्विट्ज़रलैंड। और यह आपको जब आप इस ट्रेन में बैठते हैं तो आप बिल्कुल मैस्मराइज हो जाते हैं इर्द गिर्द। इतनी खूबसूरत ट्रेन और ऊपर से इतनी पावरफुल ट्रेन आपको 4000 मीटर की बुलंदी पे लेके जा रही है और सीधा आपको वहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन लेके जाएगी। और तकरीबन ये 30 to 40 मिनट्स का जर्नी था। तो हाइट में मैं ज़रा ऊपर नीचे अप्रॉक्सीमेट हाइट बता रहा हूँ। ये 3500 to 4000 समथिंग मीटर की बुलंदी पे गोनग्राट है। और ये बहुत ही खूबसूरत आप वैली देख सकते हैं जिसमें ब्लू वाटर बिल्कुल फ्रीज हुआ है और इर्द गिर्द सफ़ेद पॉश बर्फ़ आपको दिख रही है जो बहुत ही दिलफ्रेब और ख़ूबसूरत नज़ारा पेश करती है। और यहाँ पे आप हाइकर्स देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर से हाइकिंग करते हुए काफ़ी हाइकर नीचे भी जाते हैं जिनको तकरीबन रफली 2 से ढाई घंटे लगते हैं गोनग्राट से ज़रमट हाइक वापस करते हुए। और इर्द गिर्द आप बहुत ही खूबसूरत, आप एज यू कैन सी, लवली लवली नेचुरल ब्यूटी। कोई ऐसा मुल्क दोस्तों बताइए जो 4000 मीटर की बुलंदी में भी आपको इतना बड़ा कैफ़े और इतना बड़ा प्लाजा आपको शॉपिंग के लिए, स्वीनियर शॉप्स के लिए आपको कहीं भी दिखे। इतनी डेवलपमेंट और इतनी पावरफुल ट्रेन है जो मोर देन 100 पैसेंजर्स को काफ़ी स्टीप किस्म की पहाड़ियों से लेके आते हुए आपको टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचाती है। हमने तो हमेशा हाइकिंग या चेयर लिफ्ट से ही माउंटेन की टॉप पे पहुंचे हैं। स्विट्ज़रलैंड द बेस्ट। कैफे में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फाइनली यहाँ पे फिर टॉप ऑफ द माउंटेन आ गए। और बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास लिमिटेड था क्योंकि हमने ज़रमट भी कवर करना था
और टॉप ऑफ द माउंटेन आपको पैनोरामिक व्यू भी मिलता है, और यहाँ से आप टेलीस्कोप से स्पेशल पैनोरामिक व्यू भी ले सकते हैं। एक्सीलेंट प्लेस। डिफरेंस दिखेगा कि बहुत वेल मैनर्ड और बहुत अच्छे। ये एक खूबसूरत सा कैसल आपको इर्द गिर्द आपको ये साइड पे दिखेगा, और आसपास पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी और बहुत अच्छा इर्द गिर्द माहौल था। और वी स्पेंड द टाइम विद आवर किड्स ओवर हियर एंड अमेजिंग। और यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं 6:30 का टाइम था, और बहुत बहुत अच्छा वेदर भी था, आउटस्टैंडिंग। ये आप जैसे यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं कि क्लीनिनेस क्यों इतनी ज़्यादा है, कि ये एक ट्रक आपको दिख रहा है जो साथ साथ वो हर चीज़ को वैक्यूम कर रहा है, जो भी पास रोड है, और उसको सफाई करता जा रहा है। ये है वो कासल, बहुत ही खूबसूरत कासल इन्होंने बनाया है। 2016 में नहीं था ये, अभी नया नया ही बना है। और सराउंडिंग में अगर आप देखें बहुत ही अच्छा
और हर होटल जो पहाड़ के ऊपर है वो तकरीबन एक टनल के थ्रू आपको उसकी एंट्रेंस मिलती है, विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। लास्ट टाइम हमने जो होटल बुक किया था वो वाया टनल ही एंट्रेंस थी जरमट में।
If you wanted to explore a hidden gem within the 2 to 3 days period in Switzerland, then this place, Lauterbrunnen waterfall and Interlaken, is the most favorite place for you. What a place both. Firstly, welcome to my Swiss log series, and today we are heading towards Interlaken. A beautiful and crispy morning in Switzerland for us, and the weather is really amazing. So we just decided to visit Interlaken and Lauterbrunnen in Switzerland, one of the hidden gems. So we have started journey around 9 o'clock in the morning, and our kids are really curious to find out that particular place. So if you wanted to travel the most picture-chic journey in the Switzerland, then I must recommend travel from Lausanne train to Interlaken, which is around 2 hour journey. So my elder kid is really excited in this particular 2 hour journey, and as you can see, in a lush blue sky, and the beauty of Switzerland is more prominent. If you wanted to really explore and really embrace the natural beauty in all over the world, then Switzerland is your first ever place. What a lush beauty and very clean environment. And during this journey you can see Lake Lugano. Lake Lugano is basically an Italian site, situated in Italian side, and there are a lot of Italian speaking people living in this town, small. One can compare Swiss train with any other country's train. What are lovely trains, and super smooth. There is no jerks or anything in the journey, and especially for perfect train for family trip or anything. Once we reached in Lauterbrunnen, Switzerland, we have seen this big cable car, and we excited to ride this because we are a member of Swiss passes for 6 days, so it's free for us. And lovely huge cable car, which is consist of like more than 60 people, 50-60 people, and that cable car will basically pick you from Lauterbrunnen to Jungfrau, not Jungfrau spot, but it's a like way of Jungfrau point. I have only seen these sort of natural beauty in the movies or either in the wallpapers or big cameras. I haven't seen that beautiful scenery in my life with such utmost cleanliness in the world like I have seen in Switzerland. Wow, what a place. And we are on our way to Jungfrau journey, but our target is not Jungfrau, so that's why we just came back, spent around 30 minutes there, and then we just came back to Lauterbrunnen again because we really excited to see Lauterbrunnen waterfall, which is the one of the top spot in Switzerland, but it kinda hidden gem, you can say that, because a lot of tourists doesn't know about that particular waterfall. So that cable car is so smooth and one of the best experience. Once I reached in Lauterbrunnen, I was really amazed. The surrounding, as you can see, what a surrounding. It's so beautiful, so cool and calm, and lovely, amazing atmosphere. जी पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। इधर आप देख सकते हैं 2.25 फ्रैंक्स का एंड 2.17 का पेट्रोल इन लेटरबैनन।
Wow, what a waterfall it is. And I was really lost once I reached there, and I have no idea where is my wife and where is my kids. It's what it's I think I can't explain my word. It's a genuinely wow place. If you wanted to visit Switzerland, must watch this Lauterbrunnen waterfall. Wow. So my kid Aris is doing hiking. First hiking experience of Aris in Switzerland. And Zabir as well. Zabir, are you ready for hiking? Yes. Chalo, let's go. right on the top of waterfall. The path is not that much smooth for under 5-year kid, so that's why you have to be very careful with under 5-year kids. So yeah, means finally we reached there on the top of waterfall, and there is a like lovely mesmerizing scenes up there. जी ये वापसी का रास्ता है, बहुत खूबसूरत बनाया है वाटरफॉल का, वेरी कंजस्टेड और वेरी गुड वेदर है यहाँ पे, और लवली आप ये देख सकते हैं, बड़ा रास्ता फुल नेचुरल रखा हुआ है और इजीली नॉट आइडियल फॉर किड्स एंड प्रैम्स। बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से, आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। लॉटरबर्नन नियर ग्रिंडलवाल्ड इंटरलेकन से 30 मिनट्स की ट्रेन है जो आपको यहाँ पे पहुँचाएगी। एंड वाटरफॉल के लिए बहुत से लोग दूर से आते हैं और ये बहुत खूबसूरत प्यारी सी वैली है। Well done, Jabir and Aris, you made it finally. Well done. After spending time in Lauterbrunnen, we visited Interlaken and we picked a ferry of Thun Lake,
which is one of the most picturesque ferry in Interlaken, and the weather as usual in a whole day was really amazing. So yeah, the ferry on time around 6 p.m. and we just ride that ferry straight away. And this ferry is basically a 2-hour journey in there. So yeah, it's basically surrounding around a lot of mountains, beautiful mountain, including Jungfrau. स्विट्ज़रलैंड में आपको पता है कि हर चीज़ ही मुनफरिद होती है, और ये जो क्रूज़ है ये 3 फ्लोर क्रूज़ है और मैं अभी 2nd फ्लोर में हूँ। और क्रूज़ देखे कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुली है और नीट एंड क्लीन। आपको इन्वायरमेंट इट एज यू कैन इमेजिन देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट। Wow, only 5 minutes of rain, we came across a beautiful rainbow in front of us, and we all people in the cruise mesmerized with this beautiful rainbow in front of us. And it shows how beautiful, clear rainbow I have never seen in my life, which I have seen in Switzerland. What a beauty. Finally, after a cruise trip, we headed back to our hotel for the rest. And what a day we had! We had a lovely cruise and amazing, mesmerizing waterfall in Lauterbrunnen as well. So, all in all, it's an amazing day in Switzerland.
Another day in Switzerland, an amazing day today, and we have decided to go to Rheinefall place and the रायन फॉल आपने देखा, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा। बोट ट्रिप है वहाँ पे, 30 मिनट्स की भी बोट भी चलती है, 15 मिनट्स की भी बोट चलती है, एंड पिंक भी चलती है, येलो है 30 मिनट्स की, और पिंक बोट भी 30 मिनट्स की है। जो ब्लू है वो हमने ली है, वो 7 फ्रैंक्स की पड़ी है हमें, और जो येलो बोट है वो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 22 फ्रैंक्स की पड़ेगी।
तो इट्स अपॉन योर चॉइसेस। बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा, और ये वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शन है वाटरफॉल की, जो वन ऑफ द टॉप वाटरफॉल है इन स्विट्ज़रलैंड। Once you experience Swiss trains, you will not like any other train from the rest of the world. Finally, we stopped in Interlaken and relaxed there for 15 minutes and then took a ferry from Interlaken to Thun. That particular 2 hour journey was one of the most beautiful ferry journey in my life, and I must recommend. And that ferry is very, very luxurious and amazing, and we stayed in the first class enclosure because of family, and it's awesome and lovely quiet people, and we had a lovely 2 hour journey, and it's a pure panoramic ferry. ट्रैक के पत्थर ही इतने साफ हैं कि आप तो बाकी चीज़ों की सफाई तो भूल ही जाए ना, कि जिनकी ट्रेन के ट्रैक ही और उनके पत्थर इतने ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो, तो ट्रैक इतना नीट एंड क्लीन हो, तो भाई उस मुल्क का क्या ही बात हो। जी, डे 4 बहुत अच्छा रहा, और हम रायने फॉल गए और उसके बाद हमने क्रूज़ ली। बहुत ज़बरदस्त वेदर था आज, और संडे थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बंद थी। ख़ास तौर पे ग्रोसरी स्टोर हर जगह पे आपको बंद मिलेगा। Finally, we found an open store in Sunday near Leuven station, and that store is basically cooperative store, which is called in England, and the prices are really high. Thanks guys to watching this vlog, and I hope you like this vlog, and please do subscribe and like to my channel for more vlogs like this. Thank you.
Welcome to Swiss series day 4 in Switzerland. Today we have planned to go to Mount Titlis, which is one of the most prominent place in Switzerland, 40 minutes away from Lausanne. And today we just had a lovely time in the top of the mountain, and we had a 360-degree cable car. Had awesome ice tubbing experience on the top of the mountain, and my kids as well enjoyed a lot, and it's unlimited ice tubbing free of cost. Another beautiful day in Switzerland. We have started with a train journey. The kids love natural beauty, and this panoramic train is awesome, and we had a lovely time from Lausanne to Stern station, which is around like 30 to 35 minutes journey, and we had a lovely scenery near around, and had again Lake Lugano is one of the top lakes. So once we reached there, we bought a ticket which is 48 francs each for 2 adults. Kids are free, and we had got 50% discount because we got Swiss passes. Then we just straight away one of the beautiful chairlift is waiting for us, and we just sit into that. Cable car is one of the best cable car I had in my life. It's everywhere, it's pure glass, and you had a lovely views surrounding you as well. And it's about 20 minutes journey for first cable car. And yeah, the weather is always amazing, and we were really lucky about it, and my kids is really enjoying this cable car. Beautiful 360 rotate cable car is waiting for us, and this cable car contains around like more than 55 people, which is amazing. And that cable car is really smooth and lovely, and we are heading towards top of mountain. That 360 rotate cable car, as you can see, one of the top most. Once we reached on the top of the mountain, and we were mesmerized. What an awesome scenery near around. Mount Titlis is covered with very heavy snow, and we are already well equipped, and my kids have already had a snowshoes. 4 and 5-year-old kids at this age love to hike, and especially love snow as well. So that's why we have decided to go to this place just because of kids. And this is the ice flyer. This ice flyer having a very long chairlift, which is very like thrilling sort of journey in this chairlift, and it basically leads to the ice tubbing place and also panoramic bridge as well. So firstly we have decided to enjoy the snow, heavy snow, and as you can see my feet is completely dense under the snow, and yeah, it's snow everywhere, and my kids loved it. And yeah, as you can see there are a lot of people roaming around as well. Mount Italy is very famous especially for Indians as well because of Bollywood movies. माउंट इटलीस में ये टॉप का पॉइंट है, और वी आर एक्सप्लोरिंग आइस फ्लायर राइट नाउ। और ये मस्त वॉच है, इधर आप ज़रूर आइए और ये ब्रिज का मज़ा लीजिए। आपको फ्रंट पे दिखाते हैं।
We're really lucky and we got a like 15 to 20 minutes snow shower as well, and we just stopped and we have decided to go to ice flyer later on. Firstly, we need to enjoy this lovely moment of snowing, and my kids always love snow, and we just stayed over means near ice flyer around, yeah, for 15 to 20 minutes and had an awesome time. Excellent tire spots, tub spots. So we need to take tire. Yay! Finally, we going back to the ground because we need to pick a train, glacier train, and we are planning to go to Hinterlaken, and we have a really limited time, so that's why we have decided to go down and heading towards Hinterlaken. जी ये गोल्डन पास लाइन की ट्रेन है। ये स्विस पास अगर आपके पास है तो ये मस्ट है आपके लिए। वेरी गुड एंड अमेजिंग गोल्डन पास लाइन, इस पर आप ज़रूर बैठिए। ज़बरदस्त यहाँ पे आपको इसका मिलेगा फ्लेवर और बहुत अच्छा।
One of the best scenic train journey from Mount Titlis to Interlaken, and as you can see, Lake Lugano is a really beautiful lake. Yeah, whenever you see this lake and you mesmerize the beauty of this lake. Awesome. My son Aris is still not tired and he is really enjoying the scenic beauty near around. Interlaken Town Center, and it's Monday, almost 8:30 p.m. and look at the vibe. It's so much busy, lot of halal shops as well, and you can easily hop around and have a dinner, very good dinner as well. Interlaken हम हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अरेबिक एंड एशियन सॉर्ट ऑफ आपको काफ़ी यहाँ पे वैरायटी मिलेगी। और ये कश्मीर महल रेस्टोरेंट है, अमेजिंग, तो हर चीज़ यहाँ मिलेगी। लवली होटल। We have found plenty of halal food near around in Interlaken. It's a proper Asian place if you wanted to come to Interlaken. So we were really happy and we have found very good chicken shawarma shop near around. स्विट्जरलैंड में आफ्टर 8 PM everything will be shut down except restaurant and few petrol pumps. उसके अलावा आपको everything, all the shops are stop after 8 PM. So that's the main thing you need to consider when you are visiting Switzerland. So over here Interlaken, only souvenir shops are open and restaurants are open only. It's right now it's Monday evening, 8 PM, 8:30 PM at the moment, and still you can see this around. And but Switzerland is very tough in their rules and they have to like follow their rules. So that's really amazing and sometimes bizarre as well. So you wanted to eat something but you can't. If you need a lots of variety of souvenirs, then you must go to Interlaken. It has very big shops in the town and you have got lovely souvenirs. So we had a lovely evening in Interlaken and we now are waiting for a train, which is basically double-decker train going to Bern, and then we will pick up train from Bern to Utrecht. Lovely, awesome trains, double-decker trains, which consist of children playing area. I haven't seen in my entire life in any other country that sort of facility, and my kid really loved it, and we haven't like felt 1 hour journey too long or something, and it was like spent very quickly. Had a lovely night in Lucerne. Lucerne night is lovely. As you can see, mountain looks beautiful. And thank you so much to watch my another vlog about Switzerland.
Welcome to Switzerland vlog, and today we have a last day in Switzerland and the weather was really amazing, so we have decided to pick ferry of Lake Lausanne, which is one of the best experience in my life, and we had a amazing time there. And also we roam in Lausanne city center, and the weather is always amazing in Switzerland and we were really lucky. So firstly we have decided to pick a ferry of Lausanne, Lake Lausanne, and it's about 1 hour journey from one point to another, and outstanding, and you will actually facing a very beautiful weather, and also with zero pollution and one of the best scenery in your life once you are in the cruise. And yeah, as usual, it's the weather and the clouds is welcoming Switzerland. And as you can see, it's very beautiful, and we have seen one thing in the cloud. One side of the cloud is like abundance of cloud, and on the other side it's really empty, and shows perfect beauty of Switzerland climate. My prince Aris is having an amazing time. Always he is very fond of natural beauty person, and lovely pure water and amazing, very quiet and beautiful landscape you can experience. Outstanding, the clouds, and it's just like a scenery you are drawing. Here we go. Yeah, my little prince is also very happy in museum in Lausanne town center, and near this fountain there is a very beautiful and lovely museum. I must recommend to all tourists to visit, and we had an amazing time. The museum entry is very good and very easily you can go there. It's free if you have got Swiss pass. If you don't have Swiss pass, then it must have some like really reasonable ticket price. And as you can see, it's a lovely beautiful velvet color combination, a awesome sort of presentation as well, and very quiet museum. And make sure if you have got kids, then they must be very quiet in museum. Awesome textile sort of designing and texture pattern. My wife loved that sort of museum as well, and it is having all sort of combinations of textiles and lovely color combinations of different patterns.
as usual, and awesome paintings as well. If you are a big fan of paintings or anything, then this museum I must recommend. And a lot of people are doing their work very quietly. In the end, my twin stories love cartoon in the end of museum, and yeah, it's having lots of screen surrounding you, and yeah, it's having all sort of cartoon series going on, which is very helpful for my kids. And then we had a lovely walk in Lausanne city center as well. Finally, we are in airport of Basel, Switzerland, and we are waiting for our flight and to complete check-in process, and our flight is on time, and it's very relaxing experience in airport as well. And after that 1 to 2 hours, we have seen our aircraft EasyJet waiting for us. And then later on we just went to London, and yeah, we safely reached there within 1 hour journey, and had an amazing experience, and had a lovely time in Switzerland. 5 things you need to consider when you are going to Switzerland. Let's check it out. The first and foremost thing you need to think about is the hotel accommodation in Switzerland. Accommodation is very expensive in Switzerland, £250 a night. So you have to be very careful. You need to check the site about booking.com, or if you are a member of booking.com or a member of Airbnb, so you have to check the cheapest option or best option for your family. For a family room, typical on average is like around 200 and 250 pound per night, and we have got the hotel around for 5 nights around 1,000 pounds something, but booking.com gave us a discount around 200 and 250 pounds, so we got a hotel around like 820 pounds something, which is like discount after discounted prices. So yeah, you need to first, in your budget, you need to think about the accommodation where you need to stay first. So this is a very vital thing, and normally we always pick the area Lausanne area. Lausanne is the almost middle of Switzerland, so you can easily travel along to Zermatt and on other places as well, Schaffhausen for Rhine Falls. So yeah, so Lausanne is most cost effective and more ideal place to for accommodation, I said. Transport links in Switzerland. Transports are also very expensive. The trains are really good in Switzerland, and also expensive as well. So it's up to you. If your travel is around like 3 days or 6 days or something, then you need to buy a pass. Swiss pass is one of the best option if you wanted to travel Switzerland unlimited for 3 days, if you have got 3 days trip, or if you have a 6 days trip, then travel pass, you can get a travel pass for 6 days. That travel pass, 6 days travel pass, is around 300 pound, and the other right now in 2022 it's 300 pound for 6 days, and 3 days it's around 240 pounds something. So there is not much difference between these two, and we got a pass of 6 days because we stayed in Switzerland for 6 days, and that pass is really worth it. That Swiss pass is basically includes all the boat trips, especially Lausanne Lake, Geneva Lake, and that sort of lakes boat trip is really free, and also 50% discount in gondola rides in Lausanne, Mount Plateaus, Mount Titlis, and also Matterhorn in Zermatt, and also Gongrat as well in Zermatt as well. So these sort of gondola rides, Jungfrau as well included in these gondola rides. All sort of gondola rides are 50% discount in Swiss pass. So I will
give you that sort of information in description, video description as well. So make sure if you are going to Switzerland through plane, then you have to buy this Swiss pass. Is most cost effective way to visit all attraction. Yes, flights is another third very important thing you need to consider. Depend upon your family preferences, you need to think about which airline is best for you. But we have decided EasyJet in Gatwick Airport is really good and very good service and cost effective as well. We just paid around £270 for 4 members in our family, and that flight is really smooth, around 1 hour flight roughly. And Basel Airport is more ideal for family point of view, so you can get a train from Basel Airport to get to the Lucerne straight away. If you wanted to stay in Lucerne, Basel Airport, Bern City is far more expensive as compared to Lucerne for accommodation wise. So I must recommend stay in Lucerne and get a flight from Basel airport. Or you need to choose Basel Airport is very good for transport link wise as well. But if you can select Zurich as well, Geneva as well, but we would prefer preferring Basel Airport. You will get cheaper price from UK. So you have Basel Airport is very quiet as compared to Geneva and Zurich, and you can easily get a train for Lucerne trip as well. The fourth thing is food. You have to select very carefully in Switzerland which food you wanted to eat, because food and groceries are very expensive there, and you have to be really careful. And you will try to store food or confectionery items, croissant and that sort of sandwiches, that sort of item, if you wanted to store as much as possible for next 3 to 4 days from England. If you wanted to bring those items, it would be much more easier and more cheaper to you. But if you have got kids and they need a milk or anything, then you have to prefer the Aldi is there. Aldi store is one of the best store, and you need to pick the hotel which is near to Aldi, or Migros is also very cost effective. So these two are good. Coop is basically a bit expensive than Migros and Aldi. So you will get grocery item from there. So in Lucerne there are 3 to 4 shops which are very good, ideal for Muslims, and rest of other shops are other people in the world as well. So Lucerne you have a lots of food options as well. And in Zermatt, lot of hotels and everything you can see there as well. So food wise you have to be really picky, depend upon each and every family preferences. But I just wanted to tell you about the grocery and food is very expensive in Switzerland. The fifth thing is gondola rides. Gondola rides are 50% cheaper if you have got Swiss passes, which I have already told you in the description box. That Swiss pass, if you have got that, then you will get 50% gondola rides. I have paid around £72 something for Mount Italy gondola rides, which is 50%. And you can imagine, if you haven't got 50% discount, then you have to pay double amount of money, £150 something for 4 people for gondola rides to Mount Italy. And same for Mount Plateaus, Zermatt and Jungfrau. So make sure you have got right pass for 50% discount. These gondola rides are lifetime experience, once in a lifetime. Amazing. If you are not doing gondola rides, then Switzerland trip is like 50% not worth it. So these are the 5 things you have to be really considered. For me, total budget will be like £2,000 for 4 people of family. Like £2,000 is on average budget, I can say that, for 6 days, for 5-6 days. That's what we have paid in Switzerland as well, so in 2022. But with the passage of time it will either increase or decrease, depends upon economic situation. But on average for 4 people, from Asian background, or depend upon your different preferences. And we have got a very good hotel as well. That hotel having all kitchen stuff and everything. It's basically a apartment which includes all the facilities. It's not just a room. So that's why it's all depend upon your preferences. So some people will pick France border as an accommodation point,
because it's hell cheaper as compared to Switzerland. So yeah, so it's up to you. If you pick that one, it will be much cheaper for you as well. So yeah, that's about me. So I hope you like this video. Thank you.